Hi Ritu, how are you doing? Hi, Pauline. I'm good. Hope you are well too. Ritu, how do you feel now that you've finally made your way into this one atomweight women's Grand Prix? बिल्कुल बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ग्रांड वन चैंपियनशिप के इस ऑटोवेट ग्रांड फिक्स में दुनिया की बेहतरीन जो मार्शल आर्टिस्ट हैं वो भाग ले रही हैं। तो मेरे पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कुछ करके दिखाने की। तो मैं ये चाहूंगी कि मैं जो लोग मेरे से उम्मीद करते हैं मैं उनके भरोसे पर खरी उतरूं और मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगी इसमें। We should have our translator Hello. Natasha. Hi Natasha, how are you Yes. doing? Hello. Hi. I'm good, Jenny. Yes. Hi, Rituji. हाय निताशा। Huh. So, yeah. So, Jenny, Ritu says that it's a great opportunity for her because there are champions from across the world participating in the competition. So she's really excited to be a part of the One Women's Atomweight World Grand Prix. This question is from Jay Anderson of Cage Side Press. Do you feel your wrestling background will give you an advantage in the Grand Prix, given you've competed in tournaments before? ऋतु वो बोल रहे हैं आपका रेसलिंग जो बैकग्राउंड रहा है उसके वजह से क्या आपको थोड़ा मदद होगा ये ग्रैंड प्री में और थोड़ा एडवांटेज देगा थोड़ा आपको एक हाथ ऊपर देगा अपने कंपेटिटर्स को लेकर। बिल्कुल मिक्स मार्शल आर्ट में एक रेसलिंग का बहुत ही बड़ा एडवांटेज है और मैं भी उसका मतलब उसका फायदा उठाना चाहूंगी। जो मैंने मतलब रेसलिंग की है इतने साल तो मैं चाहूंगी कि मैं उसको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाकर ग्रैंड प्रिक्स में उसका मतलब एडवांटेज में लूं उसका फायदा उठाऊं। Okay. So Jenny, she says yes, definitely, and that's the game plan. She wants to leverage her wrestling skills, yes, because of her previous experience. She's aware of the fact that it's going to just help her during the course of the Grand Prix, and she's very well going to use her strengths to make her mark at the Grand Prix. When it comes to the tournament, if you keep winning, you keep fighting. Do you enjoy having that sort of consistency, knowing who your next opponent will be as soon as they win? Yes, तो वो बोल रहे हैं ऋतु, वो बोल रहे हैं कि ये बोलते हैं ना कि जब तक जीते तब तक मजा आता है खेलने के लिए। सो अगर आप यदि ये जीतते हो आप क्या चाहोगे आपका दूसरा अपोनेंट कौन हो आगे जाकर? मैं यही कहूंगी कि ग्रैंड प्रिक्स में जितने भी पार्टिसिपेट कर रही हैं तो सभी मतलब टॉप की मार्शल आर्टिस्ट हैं और मैं किसी के भी साथ खेलना पसंद करूंगी। और ये इन लोगों के नाम के अलावा कोई और है जो आप चाहते हो ना आप इसके बाद आए सामने और इनको खेले इनके अलावा? मैं यही कहूंगी कि मतलब सभी सभी अपने आप में सभी जो भी इस वेट कैटेगरी में है सभी बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट हैं और सभी में मतलब मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो मैं यही चाहूंगी कि भी कोई भी हो मैं मतलब सभी के साथ मतलब कोई भी नाम हो मैं सभी के साथ खेलने के लिए रेडी हूँ। Okay. Jenny, Ritu believes in the fact that no matter who the competition, her performance needs to be up to the mark. So she thinks that, even at the Grand Prix, she's going to be competing, she's going to be facing MMA athletes who are more experienced than her. So she thinks, even going further on, yes, it's fun to be winning, but no matter who the opponent, no matter how much the experience, all Ritu is always focused on is giving 110% while she's at the circle. So she does not go by the opponent she's going to be facing. She usually goes by the skill sets that she brings to the circle, and that's what she's mostly emphasizing on. This question is from Dylan Bowker. Mingbo is someone that many pundits are favoring in this Grand Prix. What were your thoughts when you were told that Bo would be your opponent? तो वो बोल रहे हैं बहुत लोग फेवर करते हैं ये मैंगबो को। सो जब आपको पता चला आप इससे लड़ने वाले हो रिंग में आपको क्या समझ आया या आपके दिमाग में क्या आया तभी?
बिल्कुल मैंगबो एक मतलब बहुत ही बेहतरीन और शातिर खिलाड़ी है। वो यंग है लेकिन उसके पास मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है। वो 2 बार एमएमए की चैंपियन रह चुकी है, तो ऑफ कोर्स उसका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है मेरे से। और उसके पास सैंडा और टाई कमांडो है, उसका मतलब बेस है। तो ऑफ कोर्स उसका जो स्टैंडिंग जो है वो स्ट्रोंग है। तो मैं यही कहूंगी कि आप सबको ये मैच बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है. So Jenny, she says yes. She's aware of the fact that Mengbo is a seasoned player, although young. Mengbo is has been undefeatable so far. She and has got wins in her portfolio. She's known for her stellar performance in the previous few matches. So she says yes, she's aware that Mengbo has more experience and Taekwondo is her base, which makes her a very strong player. So Ritu says, keep watching out the match to see the interesting face-off between Mengbo and Ritu Phogat, because while Ritu knows Mengbo is difficult to defeat, Ritu also knows that she's here for the win, she's here for the kill. So yes, that is exactly what she thought of when she got to know that she's going to be facing Mengbo in the circle. This one from Jay Anderson of Cage Side Press. How do you feel Mingbo matches up with you, and what would you need to watch out from her? मैंगबो बोल रहे हैं ना ऋतु, मैंगबो आपको कैसे लगता है कि वो आपको मैच अप करता है? और जेनी, व्हाट्स द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन? What would you need to watch out from Mingbo? ओके, सो आपको मैंगबो से क्या आप देखने के लिए रुके हो? नहीं समझी मैं, मतलब क्वेश्चन नहीं समझी मैं। वो बोल रहे हैं कि मैंगबो से आप सब लोग बोल रहे हैं दैट ये इतना शातिर खिलाड़ी है ये मैंगबो, आप क्या देखना चाहते हो मैंगबो से जो आप रिंग के अंदर हो? बिल्कुल मैं कुछ नहीं, मैं अपना वहां पे जाके अपना 100% करना चाहूंगी और मैं जीत के साथ ही वापिस आना चाहूंगी। Okay. She says that right now she's only interested in entering the circle with Mangbo and knocking down Mangbo in the circle and giving 110%. That's all she's most keen on at the moment. Drake Riggs from My MMA News with this question. In terms of MMA experience, Mongbo and Sohee Ham are the most experienced fighters in the tournament. Considering you're still pretty early in your career, were you surprised that you received Mingbo in the opening round? ओके, ऋतु वो बोल रहे हैं कि प्लेयर्स जैसे मैंगबो हो गया और सोही हाम हो गया, ये बहुत एक्सपीरियंस्ड है अपने करियर में। सो क्या आपको लगता है ये आपको बहुत जल्दी प्राप्त हुआ है? ये जब आपको कॉल आया कि आपको लगा आप अभी भी अपने एमए करियर में बहुत जल्दी हो, अभी भी बहुत यंग हो, ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लगने के लिए? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं मानती। मैं दिन रात अपना हार्ड वर्क कर रही हूँ और इसी दिन के लिए मैं अपना हार्ड वर्क कर रही हूँ। मैं मानती हूँ कि वो मेरे से जितने भी इस ग्रैंड प्रिक्स में जितने भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, सभी में मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन मैं सभी को रिंग में जाकर सभी को शॉक करने वाली हूँ और सभी को चौंकाने वाली हूँ। हर मैच में आप मेरे को एक अलग ही ऋतु देखेंगे। ठीक है, ठीक है. So Gianni, Ritu says definitely not. She doesn't think that she got a call too early on in her career. She's aware that Mengbo and Sohiyam, they're more experienced, but she thinks that she's been showing progress and growth during her course in the last couple of months, especially in the last 1 year. She's been undefeated. She's had a hat trick of a win, in fact, towards the later half of last journey. So she definitely doesn't think she's young. She thinks that she is ready and it's game time. She's ready to take on anyone. So definitely she's prepared and her performance justifies her being a part of the World Grand Prix. This one's from Fight Game Asia. What would a victory over Mingbo mean for you at this stage in your career? How will that help you with your confidence? ऋतु वो बोल रहे हैं अगर आप यदि जीत जाते हो मैंगबो से लेकर,
तो ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल के लिए क्या करेगा? वो आपको इस जीत का क्या मतलब लगेगा अपने एमएमए करियर में? बिल्कुल, क्योंकि मैंगो एक बहुत ही kid और बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो उसके साथ मैं जीत के ऑफ कोर्स मेरा कॉन्फिडेंस है वो अप जाएगा, और उससे नेक्स्ट मैच मेरे अपोनेंट के साथ खेलने में वो कॉन्फिडेंस मेरा बहुत ज्यादा मेरी एडवांटेज बनेगा, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. Okay. So Gianni, she says definitely it will boost her confidence and it will help her in the matches to come. And it's going to be a milestone in her career if she is able to defeat a Mingbo in this match. Follow-up question from Fight Game Asia. At your current development as a fighter, do you think you're ready for such a tough challenge? क्या पूछ रहे हो आप रेडी हो इस चुनौती को जीतने के लिए? ये एक फॉलो अप क्वेश्चन है. बिल्कुल, मैं उसके लिए तैयार हूँ, और मैं इसी चीज के लिए मैं दिन रात हार्ड वर्क किया है, और मेरा पूरा फोकस यही है कि मैं ग्रांड प्रिक्स में हर खिलाड़ी को चौंका कर, हर खिलाड़ी को से जीत कर ग्रांड का जो बेल्ट है वो अपने नाम करूँ. Okay. Gianni, she says yes, definitely. She says that she's been toiling day in and day out just so that she's able to win the Grand Prix belt. So yes, she's been working out on herself, on her strengths, on her weaknesses. She's getting stronger with her strengths. She's chiseling out her weaknesses is because she can take on seasoned players, in the course of her MMA career. So yes, she's toiling day in and day out only to face such experienced players. And yeah. Singapore Strike Sports wants to know how your boxing training is going so far. आपकी ट्रेनिंग कैसे चल रही है ऋतु? बिल्कुल, ट्रेनिंग काफी बॉक्सिंग अच्छी एंड वो बॉक्सिंग ट्रेनिंग बोल रहे हैं. हाँ, बिल्कुल, ट्रेनिंग काफी अच्छी चल रही है. बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैंपियन, जो बॉक्सिंग के वर्ल्ड चैंपियन है, उसके अंडर में ट्रेनिंग कर रही हूँ, और डे बाय डे मेरी काफी इम्प्रूवमेंट हो रही है. कोच के कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं. तो और आप जब मेरा मैच हुआ मंगो के साथ, तो उस टाइम पे आप मेरे बॉक्सिंग, मेरी स्ट्राइकिंग आप जरूर देखने को मिलेंगे. ठीक है. So Gianni, she says yes, her training is going on really well. She's at her A game with her training. Her coach is complimenting her each day, and she's improving by the day. And she will, it'll be fun to watch her perform and show her boxing prowess in the ring, in the circle with Mengbo. So she's getting compliments every day, and she's just getting better. She's getting better at it from each day, from one day to another. This one is from Essentially Sports. What are your advantages against Mingbo in your opinion? And what are her weaknesses that you can take advantage of? Okay. और ऋतु बोल रहे हैं आपका मैंगो से आपके कौन से एडवांटेजेस है उसके साथ से लेकर, और ऐसा क्या है जो मैंगो को एडवांटेज दे सकता है आपसे, सर्कल में खेलते वक्त? एक बार फिर से बताना. हाँ, वो बोल रहे हैं आपके कौन से एडवांटेजेस है जो मैंगो से आपको जिता सकता है, और मैंगो का कौन सा ऐसा एडवांटेजेस है, और मैंगो का कौन सा ऐसा एडवांटेजेस है जिससे आपको आगे जाके ये हो सकता है, थोड़ा कठिन हो सकता है लड़ने के लिए. सो एक आपका एडवांटेज बताना है और एक उसका एडवांटेज बताना है. मेरा एडवांटेज यही है कि जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट, मेरी रेसलिंग, उसकी स्ट्राइकिंग पे हैवी पड़ने वाली है, और उसका कौन सा है? उसका मैं बस वहां पे जाके अंडर 10% देना चाहती हूँ, और तो जो जो मेरा बेस है रेसलिंग, मैं उसके बलबूते पर
उसको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाकर मैं इस गेम को जीतना चाहूंगी। जो उसका टाइक्वांडो बोला हुआ है उसको लेकर कुछ बताना चाहोगी? नहीं, जो वो उनका बेस है, क्या वो उनका एडवांटेज, उसका एडवांटेज हो सकता है? वो तो मैच में देखने पर मिलेगा कि मतलब स्ट्राइकिंग पे रेसलिंग हैवी होती है, रेसलिंग पे स्ट्राइकिंग, अच्छा। टाइकवांडो सान। ठीक है, बता देती हूँ. Okay, so Jenny, she says she's got so wrestling is Ritu Phogat's foundation. That's her base. That's the bedrock of all that she does in the circle. So her advantage is she comes from a wrestling background, so that will sort of help get an upper hand over her competitor, over Mengbo. And she doesn't think that Mengbo has an advantage that Ritu cannot face in the circle. So she knows that in Ritu's head, Ritu knows that she's at an advantageous position and she is working every day to make sure that she maintains this. This one is from Rose Gracie. You come from a wrestling family. Do you feel any added pressure because of that? हाँ, वो बता रहे हो आप एक रेसलिंग खानदान से आते हो, कोई प्रेशर है उसको लेकर? प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन लोगों की होप है वो मेरे से ज्यादा हो गई है, क्योंकि रेसलिंग में बहनों ने मतलब एक अलग मुकाम पे पहुंचाया है। तो लोगों की उम्मीद है कि ये भी उन्हीं की बहन है, तो लोगों की उम्मीद है, तो मैं ये चाहूंगी कि मैं उन सभी लोगों पर खरा उतरूं। Okay, ठीक है. So Gianni, she says pressure definitely not, but all she hopes to do is live up to the expectations of her well-wishers, her fans, her friends, because her sisters have had such a successful career in wrestling. Um, she's always focused and she's working hard towards performing well, just because she knows there are a lot of hopes associated with Ritu Phogat now, and she cannot be letting her well-wishers down. Who inspires her in her life, and who is she looking forward to competing against in the Grand Prix? रितु, आपको इंस्पायर कौन करता है और आप किससे compete करना चाहते हो ग्रैंड प्री में? आप बहुत एक्साइटेड हो किस एक बंदे को फाइट करने ग्रैंड प्री में? एंड जो आपका मेरे प्रेरणा कौन है और आपका प्रेरणा कौन है जिंदगी में? हेलो रितु. बिल्कुल मेरी प्रेरणा मेरी बहनें रही हैं, और हमेशा मतलब मेरे पापा रहे हैं, हमेशा मेरे को मोटिवेट करते हैं, हर दिन मेरे को पुश करते हैं, तो उस चीज से, और बिल्कुल जो मेरे चाहने वाले हैं, जब भी मैं उनके कमेंट्स पढ़ती हूँ तो वो चीज भी मुझे काफी मोटिवेट करती है। और ग्रांड प्रिक्स में मैं यही कहूंगी, मैंने पहले भी बताया कि ग्रांड प्रिक्स में जितने भी मार्शल आर्टिस्ट हैं सभी बहुत ही अच्छी हैं, सभी सभी मेरे को मतलब अलग अलग तरह की चुनौती देंगी, तो मैं कोई भी हो, मैं सभी के साथ सामना करने की रेडी हूँ। Okay, okay. So Jenny, she says her sisters and her father has played a huge role in her life. They've always inspired her. Her father, especially, really encourages her to push her limits, to push the envelope, and keep getting better by the day. Um, Also, the belief of her fans that Ritu Phogat is representing the country, and if a Ritu Phogat is representing the country, we will never be let down. That sort of motivates her as well. And as far as the contenders are contenders are concerned at the Grand Prix, she's okay with tackling anyone and everyone, no one in particular, but just that she knows of one thing, that whoever she faces, her performance cannot be wavered. It needs to be unwavering. It needs to be undaunted. Singapore Strike Sports with this question. What was the fans' response in India for you competing in one championship? ऋतु, आपके फैंस का क्या रिस्पॉन्स था भारत में जब उनको पता चला कि आप वन में compete करने वाले हो? बिल्कुल सभी को मतलब ये सभी को काफी उम्मीद है, काफी होप है कि मैं मतलब इंडिया की फर्स्ट वुमन एमएमए वर्ल्ड चैंपियन बनकर लौटूंगी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उन सभी की उम्मीदों पर खरा उतरूं, और
मैं मतलब देश के लिए वो वर्ल्ड चैंपियनशिप का बेल्ट लेके जाऊं, जिससे जो लोग मेरे पे उम्मीद करते हैं तो मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूं। तो बिल्कुल सभी को वो काफी अच्छा लगता है कि इंडिया से कोई मतलब इस लेवल पर ग्लोबल स्टेज पर वन चैंपियनशिप के मिक्स मार्शल आर्ट में ग्लोबल स्टेज पर रिप्रेजेंटिंग कर रही है, तो काफी पूरे देश का। ठीक है. So Jenny, she says her fans were overwhelmed when they got to know that she's going to be representing the country at a global platform at one championship, and she hopes that she sets the benchmark high for MMA in India, and she sets an example to a lot of women and a lot of fans watching out to her. So yes, the fans have been extremely happy. They've been very overwhelmed with the fact that they have an Indian player representing the country at the one championship, and Ritu just hopes that she lives up to expectations, and she she gives a stellar performance from here on. She's always been doing that, but she hopes that she continues the momentum. This question is from Dylan Bowker of My MMA News. You have a 75% finishing rate, all via strikes. How do you see the outcome of this bout? How do you see the outcome of this bout? Okay. और ऋतु वो बोल रहे हैं कि आपका 75% फिनिशिंग रेट है, ठीक है, स्ट्राइकिंग से लेकर. आपको क्या लगता है ये जो बाउट आ रहा है इसका क्या आउटकम होगा, इससे क्या बाहर आएगा? मैं बस ये कहूंगी कि मैं इस मैच को जीत के साथ बाहर आना चाहती हूँ, और ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है. ठीक है, ठीक है. She says yes. All she wants to say at this juncture is that she's going in to create, she's going in to make a milestone for herself, and she says that it'll be interesting to watch Ritu Phogat use different strategies and different styles to take down on her opponent in the circle. Do you get more recognition when you go out in the public now? तो क्या आपको और ज्यादा recognition मिलता है लोगों से जब आप बाहर जाती हो? क्या? सॉरी. क्या आपको लोग ज्यादा पहचानते हैं अभी जब आप बाहर जाती हो पब्लिक में? बिल्कुल. मतलब मूवी के बाद भी है, लेकिन अभी मतलब अभी एक मतलब मिक्स मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर अभी मेरे को मतलब ज्यादा पहले मतलब दंग मूवी से बहनों को ज्यादा मिली, लेकिन अभी मिक्स मार्शल आर्ट्स से मेरे को मतलब काफी वो चीज मिल रही है कि लोग मेरे को मतलब मतलब मेरे को पर्सनली उस चीज से जान रहे हैं. ठीक है. Jenny, she definitely thinks that yes, she's gotten a lot of recognition. Firstly, because of the movie Dangal, she is globally known, especially because of her sisters. Now, Ritu Phogat is globally known, but the good thing is, and she's very excited about the fact that because of her stint at the One Championship, she's also being known as a someone in the MMA space, and that just makes her happy. Personally, she's known for what she's bringing on to the MMA landscape with her fighting prowess, and she's happy that she's coming to be known for her MMA skill sets. One more question before we let you go, Ritu. Another one of a Evolve MMA representative, Christian the Warrior Lee, the current one lightweight world champion, will be taking on Russian KO artist Timofey Nastyukhin. What are your predictions on that one? Ritu, predictions मांग रहे हैं. प्रेडिक्शन मींस मतलब आप क्या बोलना चाहोगे उसके बारे में? आपको क्या लगता है कौन जीते कौन हारे? ये फाइट के बारे में आपको क्या लगता है, ये जो दो प्लेयर्स लड़ने वाले उनको लेकर? बिल्कुल. लीग मतलब जो लीग फैमिली बैकग्राउंड है वो मतलब सभी चैंपियन है. बेबी उसकी बहन भी मतलब ऑटम वेट कैटेगरी में है, तो ली एक बहुत ही यंग और बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है, और मैं उसकी काफी वीडियो देखती हूँ. मुझे काफी अच्छा लगता है मतलब उसको मतलब उसका गेम देखकर वो मतलब. तो मैं यही कहूंगी कि जो इन दोनों के बीच जो मैच होने वाला है वो भी मतलब दर्शकों को काफी पसंद आएगा और काफी रोमांचक होने वाला है. एंड कौन लगता है कौन जीतेगा? मैं तो ली को ही
मतलब ली की साइड ही हूँ, ली जीतेगा और मैच में कुछ भी हो सकता है वो। अच्छा, ठीक है. So she thinks that Jenny Lee has a very solid, very robust family background, and in fact, Ritu watches a lot of Lee's videos, and she's very enamored um, by his strategies, by his flair for MMA, and she thinks that the game is going to be really exciting. It's going to be very fascinating for a lot of MMA fans out there. And because of Lee's background and history of MMA and association with the game, she thinks that, Lee's the one who's going to walk away with the belt. So that's her prediction. That's it from us. Thank you so much for your time, Ritu. All the best on May 28th. Thank you, Colin. Thank you. Bye bye. Bye. Bye, Ritu. Thank you. Bye, Thank you, Jenny. Thank you so Natasha. much. Bye. That was the Indian Tigers' Ritu Phogat. She'll be taking on Mingbo for the opening round of this one women's